हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप समस्ते बहुत ही भल थे। सो आज आम पढ़ा B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर बुक दैट इज पेडागोजी ऑफ इंग्लिश यूनिट 3 लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। सो आज आम लिसनिंग उपरे पढ़ा। सो लिसनिंग क्या कह जाए दैट टाइप्स ऑफ लिसनिंग कौन अच्छी ना फोकस्ड, कैजुअल एंड जिस्ट। फोकस्ड को कौन कह जाए इंटेंसिव लिसनिंग एंड जिस्ट को कह जाए एक्सटेंसिव लिसनिंग। Then अच्छी सब skills of listening, then techniques of and materials for teaching learning. So first हमें जाने listening कहा कहा जाए। Listening is the first step in learning a language. In fact, it is the foundation stone for learning a language in full. So listening, however, should not be equated with hearing. So there's a difference between hearing and listening. We hear because we have ears, and that is, we hear anything in a casual way, not purposefully. Listening, on the other hand, is purposeful hearing. So कौन कह आमर को भी लैंग्वेज को शिखिबार फर्स्ट स्टेप कौन लिसनिंग। लिसनिंग हूँ फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग अ लैंग्वेज। जो आम गोटे लैंग्वेज शिखा चाहिए तर फर्स्ट स्टेप कौन ना लिसनिंग। सो लिसनिंग कौन गोटे फाउंडेशन स्टोन फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज इन फुल। ठीक अच्छे। सो लिसनिंग कौन गोटे फाउंडेशन स्टोन एटा हूँ फर्स्ट स्टेप। जिते भी आप गोटे लैंग्वेज शिखा चाहिए तार फर्स्ट स्टेप तार फाउंडेशन स्टोन कौन ना लिसनिंग। सो लिसनिंग और हियरिंग विषय किसी डिफरेन्स अच्छी। गोटे हूँ लिसन, आई एम लिसनिंग टू यू, देन सेकेंड हूँ आई एम हियरिंग। सो फरक कौन वी हियर बिकज वी हैव इयर्स। ठीक अच्छे। हियरिंग माने किसी भी गोटे कैजुअल वे रे मु सुनुची, किसी पर्पस नाही मोर। बट लिसनिंग माने पर्पसफुल हियरिंग। धरंतु कहीं आम सह गोटे नॉर्मल कन्वर्सेशन करूछंती बट तार विषय किसी सेमती इम्पोर्टेंट टॉपिक नाही, जस्ट नॉर्मली तार डेली लाइफ किसी शेयर करूची, देन आम हियर करूचे, राइट। बट से जगह जो टीचर क्लास रे हमको लेक्चर दिखती से आम कौन करूँ हियर करूँ ना लिसन करूँ। लिसन करूँ कहीं पर्पसफुली गोटे जिन को लर्न करने चाहूचे। सो एठू आप गोटे पॉइंट मन रखिए लिसनिंग कौन लिसनिंग हूँ पर्पसफुल हियरिंग। ठीक अच्छे। तापरे कौन देखा while listening one will be attentive to what is being said. For example, while in the classroom the pupils might hear the honking of a horn or barking of a dog, so they do not concentrate on these sounds nor do they try to register them in their minds, but they expected to listen to the teacher carefully and try to remember what he teaches. सो ये एग्जांपल कौन कहुई गोटे क्लास रे पिला माने बाहर गोटे हर्न आवाज है गोटे कुकुरटा भोकिले आसले गोटे शुणिले हियर कले। ठीक अच्छे। गोटे पर्पस नहीं तार बट जो टीचर पढ़ाऊँ तुम ध्यान दिए शुणुच ना आम लिसन करुचे से हिसाब से आमको लगे गोटे जिनस इम्पोर्टेंट अच्छी। सो आम ताको लिसन हो लिसन करूँ शुणु बट जो आमको लगे जिनटा इम्पोर्टेंस नहीं तो आम जस्ट हियर करूँ। बुझिपारे। Types of listening. So listening is broadly divided into the following 3 types. 3टा टाइप रो अच्छी listening कौन कौन ना focused listening, casual listening, आ गोटे होची कौन ना gist listening. So focused listening कौन छुआ ना intensive listening को focused listening कहा जाए, casual listening को casual listening ही कहा जाए and gist listening माने extensive listening। ठीक अच्छी। So focused or intensive listening कौन ना while listening to the radio or the TV news for election results or cricket score, we listen with a purpose and we listen attentively. That is, we focus our attention on the particular news item and came out with the facts and details. It is also concerned with the mechanical aspects of speaking or reading aloud, namely stress, intonation, pronunciation. So mainly आपण जो पढ़े फोकस लिसनिंग आपण मेनली कौन बुझी पार्छंती कि आमे एमिति किछि जिंस आमे देखुछु जेटा कि बहुत जरूरी हमको लागुछि है ना से आमे फोकस है कि सुनुछु तको ना। जब आमे रेडियो सुनु बा आमे टीवी रे न्यूज़ देखुछे इलेक्शन रिजल्ट कोन आछि क्रिकेट रो स्कोर कोन आछि आमे गोटे पर्पसफुली लिसन करछो ना। हमको जानिबार अछि हमर गोटे पर्पस अछि सेटा को सुनिबा पई।
से जिन को देखिकी तार कौन कुहाउची इलेक्शन रिजल्ट कौन आसिला क्रिकेट स्कोर केते आसिला आमे सुनुचे ना कौन पे सुनुचे हमर गोटे पर्पस अछि सेई पे आमे सुनुचे ना से पे आमे अटेंटिवली सुनुचे बुझ पाले सो आमे फोकस करछे गोटे पर्टिकुलर न्यूज आइटम ऊपर तार फैक्ट्स कौन आसिला तार डिटेल्स कौन आसिला सो एटाई होची फोकस्ड और इंटेंसिव लिसनिंग जेतले आमे इंटेंसिवली लिसन करू अटेंटिवली लिसन करू आम गोटे पर्पस थाए आम फोकस थाउ सेटा ही कौन फोकस्ड और इंटेंसिव लिसनिंग ना सो अपन बुझी पारथिए फोकस्ड और इंटेंसिव लिसनिंग देन आम आसीबा कैजुअल लिसनिंग कैजुअल लिसनिंग कौन पिला माने कैजुअल लिसनिंग इज अपोज्ड टू फोकस्ड लिसनिंग व्हेन वी लिसन टू समथिंग विदाउट अ डेफिनेट पर्पस और अटेंशन इट इज कॉल्ड कैजुअल लिसनिंग. Casual listening is otherwise known as hearing. For example, we listen to the radio or the music system while reading the newspaper or eating food. Here, we don't concentrate what we listen to and don't even care to remember what we have listened to afterwards. बुझिपारे कैजुअल लिसनिंग माने कैजुअली शुणुचे मु धरतु मुझे लंच कर लंच करते करते मु गोटे म्यूजिक शुणुची बा मु रेडियो शुणुची ठीक अच्छे सो सेटा हो कैजुअल लिसनिंग. सो कैजुअल लिसनिंग कौन ना पूरा ऑपोजिट ऑफ फोकस लिसनिंग जितने आम फोकस लिसनिंग रे कौन कर बहुत पर्पस सह अटेंशन देके शुणु बट कैजुअल लिसनिंग रे आमे ना पर्पस थाए ना आम अटेंशन दो. कैजुअल लिसनिंग कौन मु लंच करे जो मुझे कहली लंच करा बेले जदि मु गीत शुणी शुणी लंच करुच्ची बा टीवी देखी देखी लंच करुच्ची बा रेडियो शुणी शुणी लंच करुच्ची तो मु ध्यान दौनी इवन मु रिमेम्बर भी रखुनी मु कॉन्सेंट्रेट भी करूनी कि मु कौन शुणुची तो सेटा हो कैजुअली मु बस शुणुची. देन आसला आपनका जीस्ट लिसनिंग और एक्सटेंसिव लिसनिंग. सो इट इज कंसर्न्ड विथ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जीस्ट और आउटलाइन ऑफ द एक्सटेंसिव मैटर लिसन टू. It is not concerned with the mechanics of good speech or reading aloud, namely stress, intonation, and pronunciation. When you listen to a play on the radio, you may not remember the entire conversation that takes place among the characters of the play, but will be able to say in brief the main contents of the play. That is why it is called gist listening. So gist listening सिर्फ एतिक जिनस अपना मन रखिबे भाबंतु मु गोटे मूवी देखी ठीक अछि मूवी देखिली सो मु मूवी रे बीट बाय बीट कौन है कौन मन रहिबो मोर बिल्कुल नुहे ना बट मु ओवरऑल कौन तार समरीटा कहि दि परिबी तार जे मेन जिंसो मेन कंटेंट सेटा मु कहि दि परिबे ना तो सेइटाई होची जिस्ट बुझ पाले आपण जेतिकी शुणिकी आपण पूरा तो मन रखी पारे ना बीट बाय बीट डायलॉग कौन थिला बट आपण जिस्ट समरी वे जेतिकी मन रखिबे कि मु से समरीटा कहि देले जणे से मूवी रे कौन अछि से बुझी पारिबो सेइटाई होची जिस्ट लिसनिंग बार एक्सटेंसिव लिसनिंग ठीक अछि जोटा आमे कंसर्न थाउ कि आमे तार जिस्ट के बुझिबो ठीक अछि तार एक्सटेंसिव मैटर को बुझिबो ठीक अछि सो एटा होची जिस्ट लिसनिंग और एक्सटेंसिव लिसनिंग. Then asla sub skills of listening. Sub skills of listening कौन पिला बने? The sub skills of listening are also known as enabling skills. They may broadly be divided into two types ना कौन कौन ना listening for sound perception and listening for comprehension. Sub skills of listening two type कौन listening for sound perception and listening for comprehension ठीक अछि. So, listening for sound perception कौन ना here the listener has to identify the different sounds, group sounds into meaningful units. So, इठी जे हमर listener अछंती से identify करिवे different sounds को और जो group sounds जे ताको गोटे meaningful units रे करिवे. Then कौन ना interpret basic intonation patterns, stress, rhythm, pauses for expression which give clues to meaning in a particular context or situation. Then asla listening for comprehension. So while listening for comprehension, the listener has to predict what the speaker is going to talk about, understand meaning of words, phrases, sentences contextually, understand statements, command, request and questions, then follow direction, instruction, narrations and description given orally. Then identify relevant points, rejecting
irrelevant information, recognize discourse markers such as well, o, etc. in speech, then recognize the rate at which words are uttered in a sentence, then grasp the substance or the central idea of what is being spoken. So mainly कौन कहूची जिते आम कम्प्रेहेंशन लिसन करूँ आम कौन लिसन कौन करवा आम प्रेडिक्ट करवा कि स्पीकर कौन कहूँ चाहूँगी से कौन कहू जाऊँगी तार जहाँ भी वर्ड्स फ्रेजेस बा सेंटेंस यूज कर तार मीनिंग को अंडरस्टैंड करवा से जहाँ भी स्टेटमेंट देला कमांड देला रिक्वेस्ट करला क्वेश्चंस है अंडरस्टैंड करवा से डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन नरेशन डिस्क्रिप्शन को फॉलो करवा ओरली देन जो रिलेवेंट पॉइंट्स ताको आइडेंटिफाई करवा और जो इररिलेवेंट इनफॉरमेशन ताको हमें डिलीट कर देवा रिकॉग्नाइज करवा डिस्कोर्स मार्कर्स जमती कि वेल ओ एक्सेट्रा आ कौन रिकॉग्नाइज करवा को रेट रे से वर्ड्स गुड़ा को अटर कर सेंटेंस रे बुझ पारे then asla grasp the substance or the central idea of what is being spoken, listen attentively in order to ask relevant questions, understand inferred information, for example the speaker's attitude, intention, interest, etc., recognize particulars in pronunciation, production of sounds, elliptical uses of words, and maintain his or her attention for a reasonable length of time. सो एटा हूँ कौन ना लिसनिंग फॉर कम्प्रेहेंशन जोटा आम कौन करवा लिसन करवा एटेंटिवली ताकि आम से जहाँ भी कहते आम लिसन जी करवा एटेंटिवली आम कौन कर आम क्वेश्चन पचारि पार बुझिपारे सो यहीगुड़ा हूँ कौन ना लिसनिंग फॉर कम्प्रेहेंशन ये आपको देखुं ए रु आई जाए देते के सॉरी एल जाए देते आप एत सारा लिखे आ भर 3-4टा पॉइंट लिखले एनफ बुझिपारे सो एटा थिला लिसनिंग देन टाइप्स ऑफ लिसनिंग जोटा आम फोकस लिसनिंग कैजुअल लिसनिंग जिस्ट लिसनिंग उपरे पढ़िलु देन सब स्किल्स ऑफ लिसनिंग उपरे पढ़िलु जोटा आपनकर लिसनिंग फॉर साउंड परसेप्शन अच्छी लिसनिंग फॉर कम्प्रेहेंशन सो आई होप आपको वीडियोटा बहुत भल लगी एंड जब भल लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करने को भूलिबे नहीं थैंक यू फॉर वाचिंग।